for tomorrow belongs to those who prepare for it today. I, Dr. Rachna Prasad, on behalf of Mata Sundari College, MA Motivation Cell, and Department of Political Science, feel honored and blessed to welcome our respected Principal Ma'am, Professor Harpreet Kaur, IQAC Coordinator, Dr. Lokesh Kumar Gupta, Secretary to the Cell, Dr. Neeti Arora, Teacher in Charge, Poonam Ma'am, my senior faculty members, colleagues, and students who all are present here. MA Motivation Cell is a unique and inspirational platform which brings plethora of information and strategies in one go. This cell is an IQAC initiative to provide timely and appropriate guidance to students for progression towards master's degree in respective academic disciplines. It provides an opportunity to directly interact with senior students, senior faculty members, and mentors who have traversed the path and gain guidance from them in terms of preparation towards master's program available across various universities. This cell also has a Telegram group which comprises of more than 650 students, and all the updates are posted there on time-to-time basis. Now, I would like to invite IQAC Coordinator Lokesh sir, and would also request him to say his words of wisdom for our students. थैंक यू रचना। हमारे बीच आज पूजिता गोस्वामी हैं, आपने बुलाया, उनका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नीति अरोड़ा का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में, और आप लोगों ने कार्यक्रम किया इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पिछले हम अगर देखें कुछ महीनों से जिस तरह से हम लोगों ने काम किया मास्टर्स टू मोटिवेशन सेल ने, तो कॉलेज में अक्सर अब बच्चों से मिलते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ बातें करते हैं, सेल्स के बारे में बातें करते हैं, एमए के बारे में बातें करते हैं, कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में बातें करते हैं। तो एक अवेयरनेस टाइप की लोगों में आ रही है, और ये सब आपके प्रयास हैं, आपकी सेल के प्रयास हैं, और आपके जितनी ईमानदारी से जो प्रयास आप लोगों ने किए लगातार, उनके प्रयास हैं। हम आईक्यूएसी की ओर से, कॉलेज की ओर से जो भी सपोर्ट आपको चाहिए लगातार प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, और भी जो भी समय समय पर रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे वो हम प्रोवाइड कराएंगे कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. Today we have invited Pujita Goswami for this interactive session, and I would like to introduce Pujita. Pujita Goswami is a peace builder working as a program coordinator, India with Global Peace Foundation. She is an alumna of Mata Sundari College for Women and completed her graduation in political science honors in 2019. She holds a post-graduation degree in peace and conflict studies from the TATA Institute of Social Sciences and a PG diploma in folklore and cultural studies from IGNOU. Pujita holds a great interest in peace studies and has explored cultural aspects of peace building. She has researched and written a paper on sustaining peace through cultural practices, presented a paper on peace, youth, and interfaith leadership through value-based peace building, and published a booklet on prayers of peace. Currently, Pujita is organizing nationwide youth forums across the country to introduce youth to the different methods of peace building, and is also involved in providing youth empowerment and moral and innovative leadership. And recently, she has also been awarded gold medal for being best student in MA in peace and conflict studies at TIS. So I am feeling very delighted to request our alumni and also our past student Pujita to share with us this MA related queries and also have a nice discussion with our students. So over to Pujita.
Thank you so much, ma'am. Thank you for inviting me and giving me this opportunity. It's always, am I audible? Yes, yes. Yes. Okay, it's always great to come back to college, I would say, whether it's online or offline in any way. So thank you, ma'am. So yes, hello everyone. I'm Fujita. Ma'am already introduced me. Currently, I'm working with Global Peace Foundation. And okay, I actually wanted to, can I share, can you allow me to share the screen so that I can share presentation? Yes, thank you. It's okay. Still, you need to allow me. I would like to share a presentation with you all. Pragya, you make her co-host. Pujita. Now you can do it. Okay. Yes. Thank you. Is my screen visible? Yes. Okay. So as I had to discuss about MA and MA progression, so I thought I will discuss about moving towards specialization, the specialized courses. So what is specialization basically? It is because what the courses that we have in Delhi University, so it's general courses. We learned so much in one course, taking political science, which was my course, my graduation course. So we learned about constitution, law, human rights, public policy, so many things. Specialization is concentrating on a single course in which you wish to follow your future path, which you want to continue a career with. So just giving a basic example on what are the advantages of specialized course. Okay, so I'm thinking I will keep this session in both in Hindi and English, so that it becomes much more easier for everyone to understand. So when I talk about advantages, first of all, जब आप specialized course में जाते हो, it expand your ability to acquire depth knowledge of a course. आप किसी भी course को कर रहे हो, suppose you are studying political science, then you go for human rights. You learn a lot about that subject, about human rights in depth. So similarly, in any course, जिसके लिए भी आप specialization में जा रहे हो, it expands your depth knowledge उस course के लिए. अलग-अलग field से आप उस बारे में अलग-अलग way में समझ सकते हो. Secondly, it accelerates career growth with greater industry acceptance. So when you are after your graduation, after your masters, when you are in the market as in I mean the job market, when you are applying for a job, you are expanding your career, you can see कि जब specialized course आप कर लेते हो, उसके बाद आप अगर उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका ज्यादा एक्सेप्टेंस होता है, ज्यादा उसको वैल्यू भी माना जाता है. सपोज आपने पब्लिक पॉलिसी में बाद MA कर लिया, पब्लिक पॉलिसी में आपने कंटिन्यू कर लिया, देन यू कैन सी कि जब आप पब्लिक पॉलिसी के किसी या फिर रिसर्च या फिर थिंक टैंक में आप अप्लाई करना चाहोगे, यू विल सी दैट यू विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन द अदर्स, लाइक योर वैल्यू विल बी केप्ट लिटिल अबव देन द अदर्स हु हैव डन something in different courses. They are not less, but it's regarding the academic value that you set up with your like knowledge and in your resume also. Then personality development towards a particular field. Suppose आपने choose किया that you want to do law, or supposedly journalism. You are doing journalism as a specialized course and आप उस चीज को पढ़ रहे हो, continuous उसके बारे में सीख रहे हो. Similarly, you meet people of the similar field. So accordingly, your personality also develops, it builds according to that. So आपका personality भी develop हो जाता है. साथ में you also learn the desired skills. In journalism, you have to write a lot. You have to write so creative writing and जैसा आपको report writing जो भी सीखना होता है, तो वो skills भी आपको accordingly develop हो जाता है when you go for a specialized course. Next, opportunity to explore and choose your specialty area. जैसे कोई भी specialized course में आप जाओ, so I will also give example about the course that I did. So आपको उसी में अलग-अलग areas भी मिल जाते हैं. There are different aspects where you can go. So you can choose कि उसी स्पेशलाइजेशन में आप और कौन सा एरिया आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और किस में आपका करियर एडवांस करना चाहते हो. एंड ऑल्सो यू कैन एंजॉय द मार्केट क्रेडेंशियलिटी ऑफ योर मास्टर डिग्री, बिकॉज ऑलवेज यू कैन सी कि ग्रेजुएशन के बाद जब आप मास्टर्स कर लेते हो, आपके जो आपका वो है क्या बोलते क्रेडेंशियलिटी है मार्केट में, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है to apply for jobs, for anyone to accept your like resume also for job profile. Now, today I'm going to talk about one of the institute, again, my apart from Mata Sundari II, my alma mater,
TATA Institute of Social Sciences, which is known as one of the most advanced specialized courses, which provides the courses which you will usually find in abroad. They are in this mainly TATA Institute of Social Science, and it's one of the Asia's oldest institute of professional studies. So here mainly very career path में आपको specialized course और ये सब पढ़ाया जाता है. And it was established in 1936. इसके 4 campuses है. One is in Tuljapur, main is in Mumbai, then in Tuljapur, Hyderabad, and Guwahati. In this, there are 57 plus postgraduate specialized courses. And also, apart from India, it is highly associated with like international universities like University of Chicago, London School of Economics, then Massachusetts Institute of Technology, Sciences Pro, and 12 such institute. And actually, students also get the opportunity to go abroad for 1 semester to study there. So exchange programs bhi is college mein hota hai. And the best part of this, which this is the like abbreviation of TATA Institute of Social Science. So the best part of this is that the placement is really good. And the highest package of 2023 till now. So it is also the placement process going on. Till now, it's already 42.09 LP. LP is lakh per annum. So the placement is really good. So that's one of the best things. Now, coming to the campuses, there are like 4 campuses, Mumbai, Tuljapur, Hyderabad, Guwahati, as I mentioned. In Mumbai, there's 39 plus courses. So one of the very known courses of this with the highest placement package, it's management and labor studies, and it's very nice. So this Mumbai campus is also known as one of the most beautiful campus of India. Then there's education, development studies, women's studies, habitat centers, health, law, human ecology, media and culture, social work. Social work is also, this is known for social work. So for any like social work courses, if you want to go, so this is always preferable by everyone. Then library studies also, and environment. In Tuljapur campus is situated in a very rural area. So if you see in any campus of this, everywhere where it is placed in a location जहाँ से उनको जो बच्चे हैं वहाँ पे उस कोर्स के में जहाँ से और सीखने को मिल सके. So तुलजापुर campus is based on a rural area, so that वहाँ पे rural development के बहुत main courses है. You can learn social innovation and entrepreneurship, development policy, sustainable livelihood practices, natural resources, rural development. Then coming to Hyderabad, one of the known like course of Hyderabad campus is like women studies, development studies, then rural development, then education and city and governance. Public policy is also very famous in Hyderabad campus. Now coming to Guwahati campus, there's social work courses like livelihood and social entrepreneurship, public health, then community development is one of the course, counseling is one of the course, then environment and sustainable development, labor studies, sociology and social anthropology, and peace and conflict studies. So I did my master's from Guwahati campus in peace and conflict studies. So yes, so a little bit about my experience at TISS. So the MA Peace and Conflict Studies, it's basically a multidisciplinary subject. So it contains a lot of political science aspect, also sociology, also history, psychology, and many more elements. I will just make you go to the syllabus. I hope my screen is visible. Yes, so you can see the syllabus here. So it's a very multidisciplinary course, और सिर्फ आपको अपने साथ नहीं, अलग-अलग centers के साथ पढ़ने का भी मौका मिलता है. You get a wide range of experience in like any course of TISS. So here you get to study conflict, such as if anyone is here from like third year of political science, you must be studying about the social movements also. They are also part of the peace and conflict studies, the law and the governance, the political theories, you can see here, human rights, everything is part of here. And there's different like memory, you study the history, the border and conflict, the psychology. Then it comes like environment, the conflict of global south, media, then the post-migration, then also movements, as I mentioned, the social movement, multiculturalism. So the topics which are like associated in political science, mostly they are here. And one of the best thing about this is the research. So you learn research in very depth. Like from first semester itself, research is given main focus on. Also the type of education that is provided is very like market based, कि कैसे आप जब काम करोगे
जहाँ पर फील्ड में होगे, फील्ड बेस्ड है, फील्ड में आप जब होगे, आप एक्चुअली काम कर रहे होंगे, तो क्या क्या स्किल्स आपकी जरूरत है. तो इट्स नॉट ओनली इन दिस कोर्स, इन एनी कोर्स दैट यू आर डूइंग फ्रॉम TISS. तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा बिल्ड करता है. Now, yes, coming to the procedure of admission at this. So it's a long process. Actually, एक एग्जाम नहीं होता, तो इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है बहुत लंबा है. So first of all, फॉर्म्स निकल जाते हैं तो इसके दिसंबर के आसपास. So first, let me tell you the main three stages. Then I will make you go through depth of this of the timeline basically. इसका क्या क्या होता है. So first is TISNET. TISNET is like the national eligibility test. तो जहाँ जो हर किसी को, जो कोई भी कोर्स के लिए जा रहा है, किसी भी कोर्स में जा रहा है, फर्स्ट उसको टिस्नेट में जो कट ऑफ है वो उसको क्रॉस करना होगा. सो इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट जो सबको देना होता है, और लाइक 50,000 से ज्यादा लोग देते हैं. मोस्टली मैनेजमेंट का जो मुंबई का कोर्स है, मोस्टली स्टूडेंट उसके लिए देते हैं, बिकॉज एज आई मेंशन द प्लेसमेंट इज रियली गुड देयर, इवन द कोर्स इज रियली गुड. एंड यस, सो टिस्नेट एक होता है. देन और जब टिस्नेट पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, you get to give the DAF. DA is if basically a writing exam, then you to give. अब पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, अभी after COVID ये सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है. And once you get selected, then comes the personal interview, which is actually very interesting. So personal interview is very depth and very interesting in this, जहाँ पे बहुत टाइम तक आपको basically proper questions पूछा जाता है, basically to know yourself and your interest in the course. So this is the PG, the timeline I'm mentioning. So the application are usually open during November or December. So you can go through this, like you can go through this admission. All the informations are here, the eligibility, how to apply, everything is here. यस, तो यूजुअली नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है, रजिस्ट्रेशन फरवरी तक होता है. अब मेरे टाइम में तो जनवरी में बंद हो गया था, नवंबर में शुरू हुआ था, जनवरी में बंद हो गया था. तो यू शुड कीप ऑन चेकिंग कि एप्लीकेशन खुल कब रहा है इसका. देन देयर इज लाइक ऑनलाइन ओरिएंटेशन भी होता है उससे पहले, टिस्नेट देने से पहले. देन दिस इज टिस्नेट एग्जाम इस बार. सो यूजुअली फरवरी में टिस्नेट हो जाता है. सो यू नीड टू प्रिपेयर, पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना होता है. जब आपके एग्जाम्स, जैसे आप थर्ड ईयर में होगा, थर्ड ईयर में आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, उसी टाइम में आपका टिस्नेट हो जाता है पहले. इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बाकी एग्जाम्स तो बाद में होते हैं, जुलाई अगस्त. तो इसका बहुत पहले फर्स्ट राउंड एग्जाम हो जाता है, और उसके बाद उसका की आंसर निकलता है. एंड यू ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द आंसर की इफ यू आर थिंक दैट यू आर राइट एंड द आंसर की इज रॉन्ग. Okay, so that is something interesting with this. Then once TISNET answer and result are like declared, results are declared, then DAF hota hai. After DAF, this is the interview, the online assessment. So the online interview takes place, and then merit list aata hai. So teen merit list aate hai. So first, second, and third. So इसमें ये भी है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ, कि आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू गेट टू अप्लाई फॉर 3 कोर्सेज इन दिस. सो वहां पे होता है प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3. इफ यू आर अप्लाइंग, सो आपको जिस कोर्स में मेनली जाना है, तो दैट शुड बी इन प्रेफरेंस 1. प्रेफरेंस 2 में, जिसमें अगर फर्स्ट में ना मिले सेकंड में आप जा सकते हो, और अगर सेकंड में ना मिले थर्ड वाला प्रेफरेंस थर्ड में. आपको अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आपको फर्स्ट में मिल गया पर आपको सेकंड वाला चाहिए था, then your second and third will get cancelled. You have to be very sure कि आपको पहले ही मिल जाए. So yes, so this is the, yeah, so now coming to the TISNET, which is the main exam. जो cause TISNET crack करना kind of सबसे important होता है. ये हो जाए, बाकी आपको बस अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको उसमें स्टडी होना चाहिए. सो वन थिंग बिफोर ये सब जो मैं बोल रही हूँ, बिफोर दैट यू शुड ऑलवेज रियलाइज कि द कोर्स यू आर गोइंग फॉर, you need to have passion for that. You need to have in your mind that you want to study that. Because if you're going for TIS, or if you're going for any college, DU or Jamia or any college, India or abroad, you should have the passion that you want to do this course, you want to study this further. Because uske bina you won't be able to, because graduation फिर भी like our teachers help so much, our Mata Sundari also teachers help so much, कितना हमें support करते हैं, हमें सिखाते हैं. Masters is not that easy. आपको बहुत पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा आपको effort लगाने होते हैं. Like we used, for us it was online, so 24 hours kind of का work था. We used to get frustrated, but the only thing that keeps you going is that your passion, that no, you want to study, you worked hard for this and you want to do it. So ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स के लिए. एंड बी श्योर दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू.
Now coming to TISNET, okay, like let's get back to the topic. So coming to TISNET, it's in TISNET there are like 100 questions and you get 100 minutes. Okay, so these are the main topics on which the question come: the basic English, general knowledge, and mathematics. Now let me go through the syllabus very quickly. Okay, so I will send you the links if you want, the links which I am showing. तो आप उसमें डेफ में जा सकते हो. So in English में ये है, जैसे words of the sentences, right usage of fill in the blanks, right usage of words, homophones, idioms, फिर passage होता है, उसके बाद assumptions and supporting statement, then author's point of view, sentence correction. ये मतलब this is the basic like structure की किस type में questions आते हैं. Now coming to mathematics, there are 3 parts. One is mathematics, basic maths, जो हम NCERT में पढ़ते हैं. आपको literally सिर्फ NCERT पढ़ना होता है, NCC. Then logical reasoning. Logical reasoning is very interesting और उससे बहुत सारे questions आते हैं. Number series, alphabet, फिर statement और conclusion, it's very important. इसमें तो बहुत question आते हैं. Venn diagram से बहुत आता है. Linear circular family arrangement, इससे because this easy और इससे बहुत आता है, but you need to like concentrate बहुत ज़्यादा इसमें. So it's not that tough. You just all you need to do is prepare, study. That's it. And then comes the data interpretation. Data interpretation is little something जो इन दोनों से थोड़ा सा tough है, because उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है. Let me tell you, the common out of this is the pie chart. Pie chart के बहुत questions आते हैं तो इसमें. फिर उसके बाद bar graphs के आते हैं, and I think one was line graphs. Yes, इनके बहुत questions आते हैं. So you need to practice on that. Then comes the general awareness. So you need to know like general knowledge. GK बहुत important है to get into this, and not only into this, like for any courses you are applying, GK is of course very important. So GK and current affairs. So यहाँ पे जैसे you can see the topics here: national events, environment, ecology, international events क्या क्या है, awards क्या क्या है. Then even I got to know so many about the cultures, the dances, the like mask making thing, also the theaters जो इंडिया में हर जगह है, just by studying for TIS. So you get to know like ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है. 1 second, yes. So these are some of the references that you can go for. So ये जो reference मैंने book के और papers के example दिए गए हैं, it not only can help you for TISS but also आप किसी भी competitive exam prepare कर रहे हो तो इन subjects में आपको बहुत help करेगा, बहुत ज़्यादा. Such as English, ये जो मैंने दिया हुआ है आर्यहन English grammar and composition. So इस book में आपको English का जो sentence है वो हिंदी में भी लिखा होता है. So इससे आपको पढ़ने में easy होता है, आपको grammar practice करने में यहाँ पे बहुत fill in the blanks के examples होता है, so बहुत easy होता है. And I have actually जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ना वो मैंने use किया हुआ है जब मैं prepare कर रही थी. So I know that these are really helpful, very nice. आपको sentences frame करना, कैसे लिखना है, idioms, फिर सब कुछ इनमें आपको मिल जाएगा. Then this is one of the most important book जो I think anyone need to study. बेसिक इंग्लिश के लिए भी इट्स वेरी नाइस. वर्ड पावर मेड इजी. इंग्लिश के वर्ड्स इतने इजीली इसमें दिए गए हैं, आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे आपको अगर आपने वोकैबुलरी बढ़ाना है. दिस बुक इज रियली नाइस. नाउ फॉर जनरल नॉलेज, 2 of the paper that I would refer is the Hindu and the Indian Express. So यहाँ पे एक तो न्यूज भी काफी वो अच्छे से आता है. सेकेंड द एडिटोरियल, इसका जो एडिटोरियल है पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू आर गोइंग टू द न्यूज़पेपर और नॉट, read the editorial. आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ाएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा, आपका परसेप्शन, खुद का परसेप्शन डेवलप करने में हेल्प करेगा कि यू एक्सेप्ट दिस और नॉट, कि आपके लिए सही है कि नहीं, या फिर ये ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए. देन फॉर करंट अफेयर्स, दिस इज अ बुक I found very like nice, very comprehensive. Vision IS इनका monthly magazine आता है, you can find it online for free. तो Vision IS के जो booklets आते हैं ना उसमें पूरे month का summarize होता है कि क्या क्या events है. अगर आप news नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपको नहीं पसंद है news पढ़ना, आप ये पढ़ लो महीने में, it will help you a lot. Then for general knowledge you can go for Lucent GK, इसमें बहुत detail में होता है. Now coming to mathematics, mathematics में बस 6 to 10 का NCERT practice कर लो. प्रैक्टिस फॉर लाइक दिन में 1 घंटा कर लो बैठ के मैथ्स. अगर आपको पसंद भी नहीं है, बेसिक मैथ्स थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो. इट रियली हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज जो क्वेश्चंस भी होते हैं ना वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ जैसे आर डी शर्मा टाइप्स कोई क्वेश्चन नहीं आते. सो यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी.
Then for logical reasoning, the book I suggested, this is from R.S. Agrawal, Verbal and Normal Reasoning. बहुत depth है ये, I think even management exams के लिए भी ये बहुत काम आता है, लोग पढ़ते हैं. But you can also go for other logical reasoning books, cause इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको बस ट्रिक जानना होता है, तो जहां से भी आप ट्रिक जान सको वही आप पढ़ लो. सेम विद डेटा इंटरप्रिटेशन, कोई भी बुक जिससे आपको ट्रिक समझ में आए, कैसे सॉल्व करना है समझ में आए, यू कैन गो फॉर दैट. Now coming to the stage 2. Stage 2, I mean the online assessment, like the DAF and also the online like interview. The only thing you need to do is read and practice writing. So if you have to write, you need to practice that. The main thing जो second stage के लिए important है is to be socially aware कि आपके आसपास क्या हो रहा है. Especially for this, let me tell you one thing. The main question जो वो पूछते हैं वो डायरेक्ट आपके लोकेशन, आपके आसपास के पूछते हैं. आपके स्टेट के बारे में ये बताओ, आपके एरिया के बारे में ये बताओ, ये चीज आपको क्या होती है. They want to know you. So आपको अपने आसपास के like be aware क्या चल रहा है अपने आसपास, सोसाइटी में क्या चल रहा है, जानो अपने आसपास की चीजों को. एंड हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है, रीड दोस. एज आई मेंशन, एक तो आपकी राइटिंग की एबिलिटी भी बढ़ेगी उससे, और सेकेंडली आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत नॉलेज, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी चीज के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो. दे वांट टू नो दैट आर यू लाइक सोशली अवेयर, आपको लाइक पता है कि नहीं कि आपके आसपास क्या चल रहा है. सो दे आर रियली हेल्पफुल. Yes, so apart from that, as I mentioned already, this is a thing that I usually mention during my sessions also. So I go to these institutes like the colleges and school, I talk to the youth, I talk to them about youth empowerment. So as I mentioned, you need to have that like passion for your dream, the motivation basically, which I wrote here, the motivation that you want to work for something, to have the motivation कि ये करना है, यहीं पे नहीं छोड़ना है, इसके आगे बढ़ना है, ये चीज पढ़नी है मुझे. like think about it and have a dream, and not a small dream. कुछ बड़ा सोचो कि ये अचीव करना है, ये चेंज करना है. Like have a dream that actually impacts. And if you're dreaming something, whether it's small or big, you need to take ownership of your dream. Like you should be the leader of that dream. Because कोई आके आपको नहीं कर देगा कि अगर आपको ये एग्जाम देना है, सपोज आपको DU का एग्जाम देना है, कोई आपको ये नहीं करेगा कि आपको पेपर लिख देगा. You have to take ownership, you have to take leadership. तो आपको खुद से पढ़ना है, खुद से उसकी ओनरशिप लेनी है. And the word I mentioned, teamwork, is that support from your peers, from your teachers. Take support, take help, understand, talk to them, learn from them, and it helps a lot. Another thing I wanted to mention is like explore. So I didn't write that here. Explore, meet people. So you guys are in Delhi. You are actually studying in Delhi, और दिल्ली में कितना कुछ होता है. So I am basically from Assam, और हमारे वहाँ इतना एक्सपोजर नहीं है जो मुझे दिल्ली में आके मिला. दिल्ली में there are so many organizations, इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े बड़े चीजें होती रहती है. गो देयर, नेटवर्क, मीट पीपल, अंडरस्टैंड. सो इन चीजों से आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होती है. सो यस, विद दैट I would like to conclude my session. Thank you, and let me know if there's any question. And also, there's my phone number and the email ID, like if you want to contact me personally for any guidance. So yes, thank you. Students, if you have any questions. Let us wait, देखते हैं. Okay, just time के लिए हम wait कर रहे हैं. I would just like to like invite the students who are here. So I would just like to inform you कि international conference हो रहा है within like अभी 12 और 13 को. If it's about peace, so there are 4 topics in that conference. It's transforming education, environment, peace building, and youth empowerment. If anyone is interested, do let me know, because there's like fees and anything, but I will see. Just let me know if you want to join that conference, because there also you will get the chance to network with so many international, and like there are people from Japan, then US, Philippines, Indonesia, Nepal. Everyone is here, and big person is from India also. So if any students want to join, please let me know. I will write my number in the chat box and the email ID also if you anyone want to contact.
स्टूडेंट्स, आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज से कोई भी क्वेरी हो या इन जनरल भी आप पूछ सकते हो. Excuse me, ma'am, may I ask? Ma'am, any suggestions for those who want to pursue a different course for MA, not the one they are currently doing for BA, a different course? For example, I'm doing political science honors, but I want to go for psychology. So, any specific suggestions for such students? Of course you want to go. So it depends on the university wise also कि कोई university you need to check before that. आप university का एक बार check कर लो कि वो इसमें eligibility में वो आता है कि नहीं. So first process is that. पहले तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो कि दिस इज द यूनिवर्सिटी आई वांट टू गो फॉर, एंड आप एलिजिबिलिटी में एक बार चेक कर लो. जैसे मैंने तिस के बारे में बोला, देयर दे डोंट सी कि आप कौन से बैकग्राउंड से आए हो, आपका लाइक प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था. दे सी कि आप अभी जो करना चाहते हो उसके लिए आपके पैशन कितना है. तो सिमिलरली यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है ऐसी अपॉर्चुनिटीज. सो सौम्या राइट? Yes, So, ma'am. yes, Soumya. So was your GE? GE was in psychology? It's psychology. Yes, so you already have the opportunity. अगर आपका GE already psychology है, so आपको तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू ना, जो GE आपको प्रोवाइड करता है. GE में भी आप फिर आपका करियर बुक एडवांस कर सकते हो. You can mention that when you're applying to other universities. Okay, ma'am. Thank you. Yes, students, if you have more questions, please ask. Good afternoon, ma'am. I want to ask that am I audible? Yes, Kashish. Ma'am, I want to ask that if I am willing to pursue international relations in MA, so what is the scope for the same? International relation is one of the most like फेमस कोर्सेस इन इंडिया. आई थिंक सबसे ज्यादा माना भी जाता है इंटरनेशनल रिलेशन को, और अलग अलग कॉलेजेस है पूरे इंडिया में. सो यू कैन गो फॉर इट. लाइक इफ यू सी JNU इज नोन फॉर इंटरनेशनल रिलेशन. Jadavpur University in Kolkata is very famous for international relation. Then there's also Jamia Millia Islamia, so JMI also international relation is really good. So these are the top colleges जहाँ पे IR अच्छा होता है, एंड उनके भी एंट्रेंसेस की प्रोसेस है. इफ यू वांट टू सी, यू आस्किंग अबाउट द करियर और अबाउट द यूनिवर्सिटी कशिश? Career. Okay, so IR में you can go at different, like for different field. Suppose IR में लोग usually international जो organizations है उनके भी स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं. दे लर्न अबाउट दैट, दे वर्क इन सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बाद में उनको और करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है. यू कैन गो फॉर लाइक UPSC के थ्रू आप फॉरेन रिलेशन उसमें भी जा सकते हो. सो दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल. उसके लिए आपको नॉलेज टैप मिल ही जाता है IR करके. उसके अलावा जर्नलिज्म में भी, इंटरनेशनल जर्नलिज्म में भी आप जा सकते हो. एंड देयर लाइक IR इज अ वेरी लाइक ह्यूज स्कोप. लाइक आपके पास बहुत ऑप्शन होता है IR करने के बाद. इवन गवर्नमेंट में भी आई थिंक IR का बहुत स्कोप होता है. इफ MEA, so my friends, they have studied in Christ University international relations, so they are currently working with the Ministry of External Affairs. So IR में this like really good scope, and market में भी बहुत value है IR का. Thank you so much, ma'am. Yeah, was that? Yes, ma'am. That's what you asked, right? Okay. Yes, ma'am. Those who are not able to ask questions, they may put their questions in the chat box. वहां से हम लोग ले लेंगे. आपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, अगर आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे हो तो. No more questions, girls, no doubt.
कुछ नहीं पूछना है बच्चों आपने? नंदना बेटा, फिर अगर कोई बच्चा कुछ अभी पूछ रहा है एक बार पूछ लो, और नहीं तो वी कैन देन डू फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स. Ma'am, Sapna is asking something. She has written in the chat box. ओके ओके ठीक है. पॉलिटिकल साइंस individual or IR, which one is good option for MA? Sapna is asking. Yes, Sapna, it depends on your interest. So no course is good, no one is bad. So it depends कि आपको किस में आगे और काम करना है. So if you see political science, if you want to become a professor, then I would suggest you should go for political science. बहुत ज़्यादा scope अच्छा होता है. तो जब आप जनरल कोर्स से आप आगे वो करते हो प्रोफेसर बनने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है. इवन जब आप एग्जाम भी दोगे बाद में तब भी बहुत ज़्यादा वो होता है. IR में भी इफ यू लाइक इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. फर्स्ट एक्सप्लोर द सब्जेक्ट, एक्सप्लोर कि आप क्या करना चाहते हो, उसके बेसिस पे इट्स यू कैन सिलेक्ट द कोर्स. सो एज आई मेंशन कि लाइक नो गुड और नो बैड. एनी फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट, सपना? Any more questions, students? और किसी को कुछ भी पूछना है? इन जनरल भी पूछ सकते हो. Ma'am, Yashika is asking, besides professor, what else is the scope for MA in political science? Political science itself a vast course actually. So you can go for as a researcher, you can can become a researcher, you can work with think tanks, you can work with NGOs, you can do social work, you can work for rural development. आप even activist societies भी आप उनके साथ भी associate हो सकते हो. And like there's literally a lot of even law में कुछ specialized course करके उसमें भी आगे बढ़ सकते हो. आप जर्नलिज्म, क्रिएटिव राइटिंग का करके आप इवन अगर आप पॉल साइंस के साथ लैंग्वेज का या फिर कुछ कर रहे हो तब आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हो. लाइक पॉल साइंस से लाइक बहुत. सो आई यूजुअली से दिस पॉल साइंस में सारे एलिमेंट्स आप किसी भी कोर्स में जाना चाहो तो आपके पास ऑप्शन भरे पड़े लिटरली. इट्स वन द पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स टू गो फॉर MA. Not exactly as I mentioned, Jasleen. Abhi I mentioned to Soumya. If we pursue MA from same university. One second, I'm answering one by one. So for Jasleen, as I mentioned to Soumya already, that it is not important, it's not compulsory कि आपका graduation course same हो. Yes, prefer in some colleges they mention if you go through the eligibility now, you will get to know. Some college they prefer, but it's not compulsory. Like for DU also, I think for the entrance test, आप अलग course के लिए apply कर सकते हो. So the GE is the best thing in Delhi University for which आप अपना justify कर सकते हो. That's why you took this GE because आपका इसके साथ इसमें भी interest था, and now you want to explore this more. So it's basically how you're justifying it to yourself, to the like जो आपका इंटरव्यू ले रहा है और जिससे आप बात कर रहे हो, एंड ऑल्सो टू योर करियर कि आप कैसे उसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे. सो इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आप यूनिवर्सिटी वाइज भी देख लेना. Now coming to Vaishnavi's question, do we get any advantage in admission if we pursue MA from the same university? I don't think so. I think it's same. आप किसी भी it's actually it's better. What I have seen कि it's better कि आप जो I'm using this term market to apply to like jobs जहाँ पे आप job apply करोगे. तो if you see जब आप जॉब के लिए अपने आप को रेडी करते हो, आप जब अलग अलग जगह अप्लाई करते हो, सो इट्स बेटर टू हैव योर MA डिग्री फ्रॉम अ नोन यूनिवर्सिटी बिकॉज आपको बहुत प्रेफरेंस मिलता है. नॉट लाइक शोइंग ऑफ, बट जब आप इसका नाम ले लेती हूँ मैं कभी तो पीपल एक्चुअली लिसन्स टू मी. सिमिलरली जब आप DU का नाम लेते हो पीपल एक्चुअली लिसन्स. JNU, JMI, जब ऐसे इंजीनियरिंग में बिट्स पिलानी, IIT, जब आप ये टर्म्स बोल लेते हो ना, सो इट्स गुड. Like it's better to go for university, try for university who actually already have a good name in the market so that आपको ज़्यादा preference मिल जाता है. Now Divyani, okay, so okay. Any more questions? Any more questions बेटा आप लोग को पूछना है? बुक्स के बारे में मैम ने बताया ही है आपको कैसे तैयारी करनी है.
I don't think कोई क्वेश्चन है अब सुजीता. So Nandana, are you ready, beta? Yes, ma'am. A very good evening to one and all present here. It has been such an honor to be part of this wonderful event. On behalf of MA Motivation Cell, Mata Sundari College, I would like to express my gratitude to our esteemed speaker, Ms. Pujeta Goswami ma'am, for conducting such an insightful session and for sharing their valuable time with us. I would also like to thank our respected principal ma'am, Professor Harpreet Kaur ma'am, Dr. Neeti Arora ma'am, Secretary Motivation Cell, and Dr. Lokesh Kumar Gupta sir, Coordinator IQAC, for providing such a wonderful opportunity, and lastly, to our core team who facilitated and made this event a success. Respected professors, Ms. Poonam Sharma ma'am, teacher in charge, and Dr. Rachna Kumari Prasad ma'am, who has been the bane of this entire event. It is only due to her sheer will and indomitable efforts that we could bring grace to the program. From the very start, she has been the ultimate powerhouse behind coordinating everything. So, a huge thanks to you, ma'am. A special thanks to Karuna and Rhythm for coordinating this entire event and to the participants present here. Thank you and have a nice day. Thank you, Nandana. Let us open our camera for a group photo. ग्रुप फोटो के लिए एक बार आप लोग अपने कैमरा स्विच ऑन कर लो. And thank you so much, Pujita, for giving your time. In spite of that you were busy in your conferences work, and you gave such an excellent information and guidance to our students. And so we will again be inviting you for more sessions for enlightening our students. Thank you, ma'am. It's always been a pleasure. Thank you so much, लोकेश सर. आपने अपना मूल्यवान समय दिया हमें और बच्चों को अपने ग्रेसफुल वर्ड से उनको इंफॉर्मेशन दिया सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. प्रज्ञा बेटा, जब हो जाएगा ना सारा वो कैमरा का वो, और आप लोग सब लोग फीडबैक प्लीज भर देना है. फीडबैक फॉर्म मैंने रोटेट कराया है चैट बॉक्स में. प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म बिफोर लीविंग. प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म. प्रज्ञा, आर यू हियर? यू मे Yes, ma'am. वो अब आप तुम उसको ना मीटिंग को वो कर सकते हो, एंड कर सकते हो. थैंक यू वंस अगेन Okay, पूजिता. ma'am.